Hello, everyone. Welcome, 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 all of you. I'm really happy to see you all, our esteemed audience. And today, friends, I'm thrilled to have join us today for a special YouTube live session on the topic of Speak to Succeed. आगे बढ़ने के लिए आप कैसे बात करें? How would you speak? एंड इस टॉपिक के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ हैं communication coach, a renowned expert, सुशांत सिंघल. सुशांत सिंघल के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो सुशांत सिंघल जो हैं he has a track record of training over 100 plus individuals with the essential skills needed for effective public speaking. And he is a top performer and the only trainer to receive a distinction at the esteemed Adu Reid Public Speaking Training Program. As a trainer, he has attended more than 50 sessions on the topics such as emotional intelligence, creative thinking, and decision making. In addition to his training expertise, he has a collaboration with YouTube channels, content creators, and e learning platforms as a trusted YouTube anchor and content creator. And he is a seasoned Toastmaster. And his dedication and proficiency has actually helped him to reach to get the prestigious titles of competent communication communicator and competent leader. So friends, अगर मैं speak to succeed की बात करूं, I still remember the time जब मैं job में था, and just because of I was not able to speak properly, I was not able to give the presentation to the client. I had to leave the company. So, though when I started working on the things which were lacking, I started improving. I wish कि शायद मेरी सुशांत से उस समय तब बात होती तो शायद मैं आज जो हूँ उससे कहीं और ऊपर होता. So during the session, Sushant will share his valuable insights, practical tips and techniques जो आप लोगों को help कर सकती हैं to enhance the power of your voice and elevate your communication skills to the new heights. सेशन के दौरान सुशांत आपसे शेयर करेंगे हाउ कैन यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बीइंग अ कम्युनिकेशन लाइक यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन और जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस. हाउ कैन यू मास्टर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप कैसे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं. आप कैसे एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं विद एम्पैथी. आप कैसे उन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए आपके बीच में आते हैं टू गिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और कैसे आप अपने आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं. आप अपनी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इनसे. जब भी आपको लगता है कि यू हैव अ क्वेश्चन डू आस्क. जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल ऑफ यू आई एम रियली happy once again to see all of you. Just welcome Sushant Singhal. Just write welcome Sushant. And Sushant will be with you for next 35 to 40 minutes and then we'll have a question answer round. So without any delay, Sushant, over to you. Thank you so much, Prashant, for such a warm introduction and a very warm good evening to all of you. So, friends, communication मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लाइफ के एक एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 साल से I've experimented a lot with my career. In last 2-3 years, I've worked with manufacturing companies, HR consulting firms. Then, when I decided to create something from my own, I started working as a YouTube anchor, content creator, and now taking a transition in the communication and public speaking industry as a public speaking and communication trainer. And in this last 2-3 years, मैंने एक चीज रियलाइज की और वो ये है कि कम्युनिकेशन वैसे काम नहीं करती
जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार मुझे ना एक बहुत अच्छा स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी सीखनी है, कम्युनिकेशन इज अबाउट लैंग्वेज। नो, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट लैंग्वेज माय डियर फ्रेंड्स। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे ना कॉन्फिडेंस ऐसा बनाना है कि कुछ भी बोलूं लोग मेरे फैन हो जाएं। कम्युनिकेशन इज अबाउट दैट? नो, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट अबाउट दैट। कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझते हैं कुछ केस स्टडीज से। थ्योरेटिकल एग्जाम्पल नहीं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसी रिसर्चेस जो मैंने इस सेशन के लिए जस्ट बिफोर द सेशन आई हैव सर्च एंड लेट मी शेयर इट विद यू। सो बात है 1986 की, नासा चैलेंजर्स डिजास्टर। सो व्हाट हैपेंड इज 1986 में जस्ट आफ्टर द लॉन्च नासा का एक स्पेस शटल एक्सप्लोड हो गया एंड एज अ रिजल्ट 7 crew members died. Yes. Do you know the reason behind it? The researchers says the reason was lack of communication between engineering team and management team. कम्युनिकेशन होनी थी वहां के कोल्ड वेदर के बारे में, कम्युनिकेशन होनी थी उस स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के बारे में, ओरिंग एक होती है उस ओरिंग की परफॉर्मेंस के बारे में, बट दैट कम्युनिकेशन वाज समवेयर नॉट क्लियर। इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि हमने अपनी तरफ से कम्युनिकेट किया, मैनेजमेंट डिड नॉट टेक इट सीरियसली, and management team was saying that it was the engineering team who did not communicated the intensity of the problem. Again, somewhere the message was lost. हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना तो एक पूरी की पूरी चेन होती है। अभी मैं जो बोल रहा हूं और अभी आप जो सुन रहे हैं, दोनों के बीच में दिस शुड बी अ चेन ऑफ एक्शन। एंड मेरा मैसेज जैसे कि मैं चाहता हूं वो मैसेज इंटरप्रेट हो, और जैसे कि आप एक्चुअली में मैसेज इंटरप्रेट कर रहे हैं, there should be no discrepancy between that. Communication is about that. और ऐसा कोई एक एग्जांपल नहीं है दोस्तों। If you look at the history, you will find hundreds of such examples. Bhopal gas tragedy. Many people believe that it was the lack of communication, it was the lack of organization which resulted in such disaster. Demonetization. Many people believe कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज क्लियर ही नहीं थी, हाउ टू एक्सचेंज नोट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू थिंग्स। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, isn't it? सो कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कुछ एग्जांपल नेशनल लेवल के दिए, मास लेवल के दिए, बट अगर आप माइक्रो लेवल पे देखो इट बिकम्स मोर रेलेवेंट। बिजनेस में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लीडरशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। एक लीडर अगर टीम के एक मेंबर की तारीफ करता है, दूसरे की तारीफ नहीं करता, देन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट्स हैपनिंग। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। 3 years back, as Prashant shared in the introduction, I'm a member of Toastmasters community, a community of public speakers and trainers. So just 3 years back, I was fortunate enough to be elected as president of one of the Toastmasters club. Now, in my down team, there were two people serving as vice president, one in the capacity of vice president education, which in Toastmasters terminology is like HR of the club, managing the needs of the club members, and the other was vice president membership, the person who was responsible for converting guests into members, the type of marketing head of our club, you can say that. Now, मेरे से गलती क्या हुई? Both of them were performing exceptionally well, but I was somewhere inclined towards and really in that appreciation zone of our VP education. मैंने कई क्लब मीटिंग्स पे कई जगह स्टेज के ऊपर एक्नॉलेज द वर्क ऑफ वीपी एजुकेशन, और धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से मैं देखता हूँ वीपी मेंबरशिप ना क्लब्स में उनकी प्रेजेंस ही कम होने लगी, वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते थे। When I talked to him, he said, Sushant, I'm just busy. I'm just occupied with few of the projects. I said, okay, it's a non-profit organization. People have their right. So मैं भी फिर शांत हो गया. But 1 month later, I found the same guy in another club enjoying their meeting. Do you know the problem? He felt deeply bad कि मैंने उन्हें appreciate नहीं किया and I appreciated the other member. That's the problem. That's where communication comes into picture. Relationships में यही चीज होती है। एक फैमिली के अंदर कई बार सब कुछ ठीक है, दे हैव मनी, दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड,
or they have every single thing, every single resource which a family needs it for survival. But बेटा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. फादर हैज हिज ओन वर्क, मदर हैज इट्स ओन वर्क, तीनों में बात ही नहीं होती. बात नहीं होती तो एक टाइम के बाद जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, राइट? लैक ऑफ कम्युनिकेशन. So communication, my dear friends, is the foundation for strong relationships, business clarity, and getting things done. Are you all with me till now? Yes? Any questions you can ask till the point? Now, एक important चीज हम सबको समझनी होगी कि हम सबको पता है कि communication is the foundation. Okay. So if communication is not about language, then what is it which I'm going to share with all of you? तो इसे एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो एक बार की बात है, अ स्पिरिचुअल मैन केम फ्रॉम अ सत्संग. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सत्संग. इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट वेयर अ स्पिरिचुअल लीडर टीचेस some spiritual lessons to their disciples. So man came from a satsang and he was very excited. He holded his wife. He carried her to the drawing room, then to the bedroom, and finally to the balcony. Now the wife asked very surprisingly, "Oh, darling, did Guruji ask you to be romantic today?" The husband replied, "No, darling. Guruji asked me to carry all my worries and throw it out." Now the point here is, did Guruji wanted him to throw his wife out? The answer is obviously no. But he understood what he wanted to understood, isn't it? हमें कोई कुछ भी समझाता है, लेकिन हम समझते वही हैं जो कि हम समझना चाहते हैं. Do you all agree with this thought? So what is more important in the communication is context. Yes. Do we do enough efforts to make the other person understand the context behind whatever we are saying? Think about it. हो सकता है आप कोई चीज मजाक में कह रहे हो and the other person feel it as sarcasm. हो सकता है आपकी कोई advice serious हो and the other person take it lightly. The context gets missed. In the NASA's case study, most likely my assumption says that both the departments must have communicated their concerns, but in the realm of other important works, the context got missed. So one of the most important pillars of communication is context. The more you are able to manage it, the better you are able to manage the context, the better the communication flows. That's what communication is about. तो अब सवाल आता है, कई लोग कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. वी कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट हम अपनी तरफ से तो बेस्ट देते हैं कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए. वी गिव एग्जांपल्स, वी गिव रेफरेंसेस. सो व्हाई इज इट दैट द कॉन्टेक्स्ट गेट्स मिस्ड? ये चीज समझे. चलो एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ समझते हैं. सो प्रशांत सर, कैन यू प्लीज शेयर दैट पिक्चर, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. थैंक यू. So people who are there in this live stream till the point, can you tell me how many squares are there in this picture? You have 30 seconds to answer. You can shoot random answers in the chat itself. Let's see. Prashant sir, I would encourage you also to participate and tell us how many number of squares you see. Do we have any reply? Okay. Not till now. Okay. We'll just wait for 10-20 more seconds and then I'll explain you the context behind this game. Context, you know. Would you like to try, Prashant sir? Yeah. I think 32. 32. Okay. When I played this game, I got 36. And when I conduct this activity in my sessions, most of them say 28, 32, 36, 34, 33. Some of them even go out of the box 100, 120, 150, 170, and whatnot. The idea is Okay.
all of us get different answers. Yeah. Now, I have 26. a We question have the for answer. all of you. Yes, we have an answer 26. Omega says 26. Okay. So we all somewhere arrive on the different board. Prashant sir 32, Omega 26. When I played this game for the first time, the answer was 36, which I got. Now, the important question is people who are there in the live stream, tell me one thing. Mathematics is an objective subject, right? We all can arrive on one answer if we follow the right understanding, if we have the right knowledge. So, even in an objective subject like mathematics, if we all are arriving on different answers, communication is very subjective. How can we expect all of us to be on the same page? There is a strong possibility you are saying something in a different zone, in a different tone, and I might interpret it in a completely different way, isn't it? हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो, मुझे कुछ और पसंद हो. So isn't it true that all of us are different in perceptions and opinions? And that becomes the number one reason that people are not able to communicate their context, right? हम सब सिर्फ दिखने में एक दूसरे से अलग नहीं होते. हम सब बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी एक दूसरे से अलग होते हैं. हमारी नीड्स, हमारा इंटरेस्ट, हमारे ओपिनियंस एक दूसरे से अलग होते हैं. हमारे डेमोग्राफिक्स एज इन हमारा एज, जेंडर, चीजों को समझने की कैपेसिटी एक दूसरे से अलग होती है. हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस, हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग होते हैं. तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपको कोई भी एक्सवाइजेड टॉपिक किसी दूसरे इंसान को समझाना है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में उसे समझाना है या दूसरे की लैंग्वेज में? थिंक अबाउट इट. इजंट इट ट्रू दैट हमें कुछ भी किसी को समझाना है तो हमें दूसरे की लैंग्वेज में उसे वो चीज समझानी होगी, तभी वो चीज समझेगा ना. सो इफ यू आर टॉकिंग टू अ किड, make sure that you go in the shoes of a kid and start seeing the world as a kid in order to convince that kid. एक बच्चे को पढ़ाई की वैल्यू सिखानी है तो ये मत बोलो कि देख बेटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 12th पास करने के बाद तुझे कॉलेज जाना है, हमारा नाम रोशन करना है. ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, ही इज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट. बल्कि हमें उन्हें ये बोलना है कि पढ़ाई से उनकी लाइफ कैसे बेटर होगी, what type of confidence they can build with studies. Context, communication is contextual. हमें चीजों को उनकी लैंग्वेज में समझाना है. That's the purpose of this activity. We can stop sharing the screen, Prashant sir, if that's fine. Okay, thank you. So now we have covered one important pillar of communication, that is how to make the other person feel like they are a part of communication. So what did we discover? We have to understand the demographic and psychographic aspect of the other person. Demographic aspect means the age, gender, and their income status, their biological conditioning, and similarly their need, interest, their perceptions, their arguments. That is all their psychographic. So we have to make sure that our communication is not in our realm, but in the realm of the other person. That's the most important pillar. Now अब एक और important सवाल आता है. अब कई लोग कहते हैं चलो हमने इन फंडामेंटल्स को मास्टर कर लिया, हम कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं, और वो भी अपनी लैंग्वेज में नहीं, दूसरे की लैंग्वेज में, बट हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, हमारी बातों से लोग इन्फ्लुएंस ही नहीं होते. हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट हमारे अंदर वो पावर क्यों नहीं आ पाती? मैनी पीपल आस्क मी दिस. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. मान लो एक टॉपिक पे आप दो लोगों की स्पीच सुनते हो. वन इज सचिन तेंदुलकर एंड द अदर इज लेट्स से अनन्या पांडे. और टॉपिक है हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू बिल्ड योर करियर फ्रॉम स्क्रैच. बिल्कुल जमीन से शुरू करके कैसे हम शिखर तक पहुंचे, दैट इज द टॉपिक. नाउ आउट ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड the other celebrity Ananya Pandey,
Which of the celebrity you would get inclined to listen and follow? Any thoughts on that? If you want, you can type it in the chat. We can have a conversational style of discussing things out. Yes. So when I ask this question in seminars, majority of the people say it is Sachin Tendulkar, of course, because in our perception and opinion, Ananya Pandey is a nepo kid. She has built her journey with the help of an already established uh, context and alliances. So now I'm not saying that one is right and the other is wrong, but the idea is that in order to create an influence in the mind of the other person must carry an authority for you. सामने वाले को एक अथॉरिटी फिगर आपके अंदर दिखनी चाहिए, ओनली देन दी अदर पर्सन गेट्स कन्विंस्ड. तो कई लोग कहते हैं इसका मतलब तो हमारा एक बैरियर बन गया ना, वो अथॉरिटी बनी नहीं सकती, हमने लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है, वी आर नॉट दैट सक्सेसफुल एज सचिन तेंदुलकर और एम एस धोनी और आमिर खान. नहीं माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट ट्रू. अथॉरिटी हमेशा बन सकती है विद द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, विद द वे यू आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन. यस, उसका एक छोटा सा तरीका होता है टू मेक दैट अथॉरिटी, दैट यू कैरी योर कॉन्वर्सेशन इन सच अ सटल वे दैट यू टॉक अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. अभी मैंने क्या किया व्हेन वी स्टार्टेड दिस कम्युनिकेशन, मैंने बहुत ही सटल तरीके से कहा कि कम्युनिकेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है. आई वर्क विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आई वर्क विद एचआर कंसल्टिंग, आई वर्क विद मल्टीपल ट्रेनर्स एंड फ्रीलांसर्स. सो व्हाट आई डिड, I don't have millions of subscribers on my YouTube channel, but in a very subtle way, I talked about my experience so that you people feel that okay, if we are listening to someone, we are listening to a person who carries a command in his field. That's how the authority is built. You know, किसी को भी आपको कन्विंस करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी तारीफें करो, दैट मेक्स यू नार्सिस्टिक इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन. बट आपको करना क्या है, आपको बड़े ही सटल तरीके से अपने जो पास के एक्सपीरियंसेस हैं, पास के स्ट्रगल्स हैं, उन्हें कनेक्ट करना है. तो मैं एक और जो अपने पार्टिसिपेंट से फॉलो क्वेश्चन पूछता हूं ऑन दिस नोट, अगर अनन्या पांडे को अपनी अथॉरिटी बनानी है ऑन द टॉपिक हाउ टू बिल्ड सक्सेस फ्रॉम स्क्रैच, तो उन्हें क्या करना होगा? थिंक अबाउट इट. Any random reply from anyone would like to participate, they can type it in the chat. Okay, I'll tell you the type of responses I get. जब हम इस पे brainstorm करते हैं तो हम देखते हैं there are so many things she can do. Number one, she needs to acknowledge the fact that yes, she comes from a privileged family. But having said that, that has helped her to get her first two films. But whatever work she has done after that is because of the credibility she has built in her career. She can talk about that. She can talk about one specific stories. हम स्टोरी टेलिंग पे आएंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. बट हम सबके पास ना कुछ स्टोरीज जरूर होती हैं. स्टोरीज ऑफ आवर पर्सनल स्ट्रगल्स. कोई एक ऐसी मूवी तो होगी जब उन्होंने रोल में जाने के लिए शी हैज स्ट्रगल्ड, शी हैज लर्न समथिंग इन द प्रोसेस. शी कैन टॉक अबाउट दैट. द आइडिया इज यू बिल्ड एन अथॉरिटी इन द माइंड्स ऑफ द अदर पर्सन. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ethos in technical terms. You know, these are all in communication we call them rhetorical devices, how to influence the other person. And the way is that you create authority for the other person. That is called ethos. अब जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टू क्रिएट इन्फ्लुएंस इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज इमोशंस. इमोशंस को हिट करो. आप इमोशंस को आप कैसे हिट करोगे? यू टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच आर देयर पेन पॉइंट. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? Whenever they try to create a kind of divide and rule, they start scratching our wounds. वो उन experiences के बारे में बात करने लगते हैं which are painful to us. I'm not saying do it in a negative way, but do it in a positive way. You help the other person solve their problem. If someone, let's say, is very much insecure about, let's say, their looks, their body, start talking to them in the sense that they start feeling good about how the way they look. If someone is insecure about their career, start talking to them that it's okay. We all go through this time. It's okay to feel that.
और कई बार दोस्तों सामने वाला इंसान ना आपको ये बताएगा नहीं कि वो अंदर से क्या फील कर रहा है, आपको समझना होगा। और आप सामने वाले को तभी समझ सकते हो when your mind, your emotions are absolutely silent. पहले से कुछ अज्यूम नहीं करना, अपना जो ग्लास है ना उसे पहले से फिल नहीं करना, माइंड को ओपन रखना है। Be open to see what the other person responds to. Be open to find those areas. And that's how you'll connect with the emotions of the other person. Connect with the emotion. And that in rhetorical device we call pathos. तो अब हमने क्या किया, सामने वाले पे क्रेडिबिलिटी बना दी, सामने वाले को इमोशनली इन्फ्लुएंस किया। अब द लास्ट वे टू इन्फ्लुएंस समवन इज लॉजिक। यस, आप किसी भी अच्छे पॉलिटिशियन को देख लो, किसी भी एक अच्छी टॉक को देख लो, दैट इज नॉट ओनली हेवायर, दैट इज नॉट ओनली मोटिवेशनल इन नेचर, दैट डू दैट, दिस हैपेंस, देयर इज आल्सो अ लॉजिक बिहाइंड दैट। दे आल्सो कम अप विद फैक्ट्स, फिगर्स, केस स्टडीज, रिसर्चेस, that is called logos. Ethos, the personal credibility you have as a person to talk about whatever you're talking about. Pathos, the emotion which connects to the other person. And logos, the logical side of the argument. अब ध्यान से देखो मैंने इस कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट किया. I started by building a personal credibility. Then I moved on towards emotionals, that how communication is important in various aspects of our life. And then I also shared about some important research, some practical research based facts which tells us how communication is most important part of any business or project. This is how the influence has been made. तो आप जब भी किसी से बात करो पर्सनली या पब्लिक स्पीकिंग करो, स्टेज पे बोलो, make sure that you hit the other person on the logical side, on the emotional side, and you talk in such a subtle way that your personal authority gets established in the mind of the other person. This is how we influence. So we have covered the pillars of communication till now. So I'll just take a pause here if anyone has a question, or otherwise we are going to move to our part two, very interesting one, how to make our communication interesting and intriguing. So just a pause for 5 seconds. Do we have any question? Anyone wants to share anything? Okay, let's move to the part two. अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने इन्फ्लुएंस भी बना लिया, हमने अपनी कम्युनिकेशन को सामने वाले की लैंग्वेज में बोलना भी शुरू कर दिया, इंटरेस्टिंग भी बना लिया, राइट? अब कई लोग कहते हैं नाउ व्हाट, हम कुछ भी सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाला भूल जाता है, उसे हमारी बातें याद ही नहीं रहती। तो सामने वाले को आपकी बातें याद करवाना भी आपका पर्पस है। Communication is also about that. And now we are going to discuss that how to make our communication sounds interesting. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक बड़ा सा लेक्चर दूं 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या याद रहा उस लेक्चर में, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा चीजें याद रहेंगी, या फिर मैं आपको एक 3 घंटे की मूवी दिखाऊं और मूवी के अंदर वही सारे फैक्ट्स हो जो मैंने अपनी स्पीच में बताए, तब आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. Think about it. Anyone can answer in the chat. When I ask this question, people in 99% of the say that we will remember movies more. इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे ना बचपने में, तो हिस्ट्री याद नहीं रहती थी, लेकिन फिर हमने मूवीज देखी भगत सिंह के ऊपर, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हमने मूवी देखी गांधी जी के ऊपर, और उन मूवीज से जो हमें हिस्ट्री सीखी वो हिस्ट्री हमें याद रहती है. होता है ना ऐसा? So what does that mean? That means the visual memories are stronger than any other way of creating a memory. Agree? तो अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे शब्दों से, हमारे स्पोकन वर्ड से सामने वाले इंसान के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, एक विजुअल क्रिएट हो जाए? कैसे करेंगे? सोचो. दैट इज वेरी इंट्रीगिंग इफ यू कैच इट. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं कहता हूं मेरे हाथों में एक बॉल है. Does it create any visual in your mind? I don't think so. Now let's say I use my hand to describe that ball.
ये मेरे हाथों में जो बॉल है, ये मेरे हाथों में जो बॉल है. Now, does that visual improve? I'm 100% sure the visual must have improved now, isn't it? Now, उसे अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं. मान लो मैं इस बॉल के बारे में आपको कुछ डिटेल्स दूं. मैं कहूं ये जो मेरे हाथों में लाल कलर की बॉल है, ये जो मेरे हाथों में लाल कलर की बॉल है. नाउ आर यू एबल टू इमेजिन समथिंग? अब क्या हो अगर मैं इस लाल कलर की बॉल के साथ एक स्टोरी एसोसिएट कर दूं? ये जो बॉल है ना, इससे मेरी यादें जुड़ी हैं. इस बॉल के साथ अपने बचपन के दोस्त हर्षित के साथ मैं रोज 3 घंटे क्रिकेट खेलता था. मैं क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट था बचपन में. नाउ व्हाट इज इट? व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट गिविंग यू मोर एंड मोर डिटेल्स. Yes, Rajesh. Detailing is the secret of storytelling. And stories creates a conversation. Stories makes a conversation sounds interesting. Yes. I'm sharing so because आप कभी भी किसी भी इंसान को कुछ important कोई चीज communicate करो, be it in a form of one-to-one conversation or be it on a stage giving a presentation, try to create stories. Create stories by giving details. This is how the picture has been created in the minds of the other person. Detailing, very important secret. Now, if we have learned the principle of detailing and if we are liking it, I'll share some more interesting tips on how to make our content interesting. Yes, so are we ready? Yes, I can see some of the people are now active in the chat, so that's good to see. Now, एक और important aspect के बारे में बात करते हैं. Lovely, thank you Muhib. Glad you are liking the session. So now let's talk about other ways of making our content interesting. And the second way, other than storytelling, is analogies. Analogies क्या होती हैं? एक गाना है, बहुत रोमांटिक सा गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब का. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा. हम सब ने ये गाना कभी ना कभी सुना होगा, right? Now, what are we doing in this song? We're using an analogy to compare the beauty of a person with something which is like an epitome when we talk about beauty. So comparisons makes your words, makes your conversation looks interesting. Okay. Now, कैसे इन comparisons को हम build कर सकते हैं? Let's focus on that. For example, you have to say that this is a very difficult task. What else you can say that it can make your words sound more interesting? Anyone would like to comment? This is a very difficult task. How you can express it by using an analogy? I'll wait for maybe 10 seconds, 20 seconds for a comment. Okay. Anyone ready with the reply can type it in the chat. No issues. Now, when I ask this question in my webinars and seminars, people generally say that this task is as difficult as climbing a mountain. Analogy. You make it interesting. एक और witty one की बात करते हैं. This is going to tickle some funny bones. Someone has to say, I got married on 15th August. Is there any other way one can express his or her freedom or not so freedom or, type of bondage? Someone, when I asked this question in one of my seminars, said, on India's Independence Day, I lost my independence. So the idea is that you talk in such a way, it's like separating salt and sugar. Okay, would like to know more about this, Omika. That sounds like a very interesting analogy. But I hope we are getting the idea. The idea is that you talk in such a way that your words looks interesting. जितने आपके शब्द इंटरेस्टिंग लगेंगे उतना ही सामने वाला आपको ज्यादा सुनेगा. अब एक फाइनल टिप की बात करते हैं. हाउ टू मेक योर वर्ड्स, हाउ टू मेक योर कंटेंट लुक्स मोर इंटरेस्टिंग. द थर्ड टिप इज यूज निमोनिक. निमोनिक क्या होते हैं, किसी को पता है? इट्स एन इंग्लिश वर्ड, निमोनिक. सो निमोनिक्स आर एब्रीवेशंस. एब्रीवेशंस हम समझते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 3 Ds ऑफ इंडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड. व्हाट इज इट? अ निमोनिक.
इसी तरह से अगर हम कोई भी एक ऐसा वर्ड पकड़ लें जो हमारे पूरे कंटेंट की एसेंस को कैप्चर कर सकता है, देन our words becomes very clear. The other person understands whatever we are saying in a higher spirit. The context becomes clearer. So for example, जैसे प्रशांत सर को मुझे कहना है कि सुशांत, अपने कंटेंट को ना प्रिसाइज रखना, लोगों को बोर नहीं करना, 1 घंटे से ज्यादा हमें एक्सीड नहीं करना है सेशन. So how he can put it up in a way that it becomes interesting for me? He can say, Sushant, when you are on the stage, kiss, where KISS stands for keep it short and simple. This is what? An abbreviation which would be very witty and easy for me to remember. Omika has something to say, mix salt and sugar को अलग करना मुश्किल है because they look alike. Oh, lovely, Omika. So all of us are getting, the zone of what we are discussing, isn't it? The idea is that we share something in a way that the other person seems very mesmerized and gets hooked by whatever we are saying. This is how we make our conversation interesting. So anyone would like to share any random example of a mnemonic? We have discussed the example of 3D. We have discussed KISS, keep it short and simple. Any other random example? So, somebody once said, एक फिलोसफर को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स की जीडीपी समझ नहीं आती है. आई एम इंटरेस्टेड इन जीडीपी ऑफ लाइफ. And then GDP of life, he said, is gratitude, determination, and perseverance. A beautiful way to put things up, isn't it? So सामने वाला अगर हमारी बात नहीं समझ सकता, अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करूं, so what is it that सबसे पहले हमें ये समझना है कि communication is not only about language. इस बैरियर को तोड़ना है. We can communicate in Hindi, we can communicate in any language which we want. So don't get obsessed with this thought. I have to become fluent in one language. You may do it because of your professional commitments, because of your rising, because of getting a better chance in your career. But communication is not about that. Communication is more about explaining the context of whatever you are explaining. And how to explain the context of whatever you are explaining. First important pillar, which we have discussed, that understand what the other person wants from you. You are different, he is different. So make sure that both of you are on the same page. And how to do that? Talk in their language. उनसे उनकी भाषा में बात करो. कोई अगर लॉजिकल है तो उसे लॉजिक के तरीके से बात करो. किसी को स्टोरीज पसंद है तो उसे स्टोरी सुनाओ. कोई उल्टी सीधी बातें करता है, उसे उसकी लैंग्वेज में समझाओ. जो सिंपल लैंग्वेज समझता है उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज समझता है उसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाओ, बट उसकी भाषा में बात करो. Then we discussed three important pillars of influencing someone, which is your personal credibility and the stories which you put in, the emotional connection, pathos, and logic, which is logos. And lastly, we came upon how to make our content interesting, how to make our words interesting. There we discussed the technique of storytelling, which is detailing. We came up with a beautiful technique called analogies, that we bring in certain comparisons. And lastly, it is mnemonic, that makes certain abbreviations which can make your word, which can make your content looks more precise. So that's it from my side. And thank you, Prashant sir, for giving me this opportunity. It was lovely discussing with all of you. If any one of you have any questions, we're open for questions. And over to you, sir. All right. Thank you. Thank you so much, Sushant. It's really a wonderful session. I'm really, thankful to you for accepting this proposal and empowering all of us. It's a great session, and I'm learning a lot from you. So, friends, if you have questions, please write. And Sushant is here to answer your questions. Also, I have some questions with me sent by some people. So, Okay. till the time जब तक कोई नहीं पूछता है, I will be asking questions. So don't think that it can be a silly question. Whatever comes to your mind to ask. Okay. So मेरा पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है कि how can we overcome the fear of public speaking? Like as you have shared some techniques, but when we talk about like practically कि कुछ ऐसी techniques आप हमें बताओ
कि उनको यूज़ करके मैं अपनी फ़ियर को दूर कर सकूँ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? हम्म। देखो, फियर की जब भी बात आती है ना, आई थिंक सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि फियर रियल है या इमेजिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ गेटिंग बर्न्ड, दैट इज अ रियल फियर। लेकिन वो रियल कब है? अगर आप आग से खेल रहे हो, किसी भी तरह से यू आर बीइंग केयरलेस। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशन एंड स्टिल इफ यू आर वरिड, दैट इज एन इमेजिनरी फियर। Same thing goes for driving, let's say. If somebody has not learned the skill of driving and they're just driving on highway, then that fear should be real. And real fear should be acknowledged. Real fear should be respected because only that fear creates boundaries. Otherwise, we all becomes a kind of uncivilized person, right? Now, the same context goes in public speaking. पहले ये देखो कि fear public speaking का real कैसे है? क्या होगा if I go completely blank on the stage? और क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर ऑन द सेम बोट? एंड इफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑन द सेम बोट, देन व्हाई इज इट दैट एम आई अफ्रेड ऑफ डूइंग थिंग्स? सो जब मैं इस तरह से क्वेश्चनिंग करता हूँ, तो बहुत सी बार मुझे एक आंसर मिलता है, और वो आंसर ये मिलता है कि पब्लिक स्पीकिंग से तो हमें डर ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब मैं वन टू वन सेशंस करता हूँ, सब बड़े खुल के बोलते हैं, अपनी बातें बहुत अच्छे से बताते हैं। या फिर जब मैं क्लोज रूम सेशंस करता हूँ 6 7 लोगों के आगे, तो बहुत आराम से बोलते हैं। वो कहते हैं डर हमें लगता है जब सामने हजारों लोग बैठे होते हैं। सो इट इज नॉट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इट इज जनरली द फियर ऑफ पीपल। नाउ व्हाई इज इट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ पीपल? Maybe you'll find an answer. Something happened in the past that made me less confident on talking to people. Maybe I'll find another aspect of my thinking, that I've always created a kind of stigma, that public speakers have a certain fluency, public speakers have a certain way of presenting things, and you think that you are not good enough. So the way I'm presenting this answer is that सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। Your understanding is the foundation of all your thoughts, of all your actions. अगर वो अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी नहीं रही, तो कुछ नहीं अच्छा होने वाला। नाउ सिंस यू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग, अपने से थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड किया, जर्नलिंग की, क्वेश्चनिंग की, यू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग दैट माई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट रियल, इट इज समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड इन माई माइंड। नाउ द सेकेंड स्टेप्स कम, कि फिर अब उस जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट पैटर्न है, उसे हम चेंज कैसे करेंगे। उसमें आई थिंक प्रशांत सर मेरे से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। द पावर ऑफ एफर्मेशंस इज रियली अमेजिंग। आई आल्सो यूज इट। यूज एफर्मेशंस, create a kind of affirmation for you, that this is something I can do, this is something, this is not a real fear, this is an imaginary fear, I am a great public speaker. Say these things with you. You know, अंग्रेजी में एक कहावत है, fake it till you make it, fake it to the point that you actually make it. So this is step number 2, and step number 3, start small. ड्राइविंग सीखनी है तो पहले खाली सड़क पे ड्राइविंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखनी है तो पहले स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखते हैं, राइट? So, the fear, so what you have to do right now is join the platform where people are like you. People are not going to judge you there. Platforms like Toastmaster, a shallow public speaking community where anyone from any walk of life can join with the purpose of improving their public speaking. Join such organizations. Take baby steps. यो संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और कंटेंट क्रिएटर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं लाइफ में अगर कंसिस्टेंट रहना है ना, तो ये याद रखो कि भागना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है, बस चलते रहना है। तो इस पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में, इस कम्युनिकेशन की जर्नी में हमें बस चलते रहना है। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। I hope you've got the answer, but it was really amazing. Thank you so much for the wonderful answer. The next question is what strategies can help improving the vocal variety and tone while speaking? ओके, वोकल वैरायटी एंड टोन। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि जो भी आप चीज बोलना चाह रहे हो, जो भी आपका मैसेज है, क्या आपकी वॉइस वो मैसेज कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू प्रैक्टिस इट इज, कोई भी आप स्टोरी पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी अराउंड 2 years बैक, गिफ्ट ऑफ मगाए। दैट वॉज द स्टोरी एंड दैट वॉज अ काइंड ऑफ रोमांटिक स्टोरी ऑफ अ कपल. So when I looked at that story, the way I practiced at that time, I looked at the dialogues of the female character, dialogues of the male protagonist,
and I just saw that is my voice convincing the emotion the character wants to convey. For example, if there is a question mark, so see that if am I speaking in a way that it creates a question. If the other person is shocked, you'll see an exclamation mark return if the other person is shocked. What? So see whether your voice creates uh, that kind of shock or not. So this is how what you have to do. First, read those pages, read those textures where you can find a conversational style, and then whenever you see an emotion being expressed, just record your voice and see whether am I talking in that emotion or not. This is how you can improve the tonality part of it, the modulation part of your voice. Secondly, when it comes to the other pillars of voice, let's say pauses. Now, pauses को master करने के लिए ना, you need time. हो सकता है कि it comes after, uh, it cannot just come after listening. It requires a lot of practice. But what I would recommend all of you is whenever you speak, be it in front of camera, be it in front of public, record your videos, send it to your mentors, send it to me if you want, and then only when you'll get a constant feedback, अच्छा यहाँ पे pauses inappropriate थे, यहाँ पे you were not able to convey the emotion you wanted to convey. At that time only, once you'll track your progress, you will be able to improve it. Hope that answers your question. Yeah, it's great, and I just would like to add something on this. If you really want to improve, like on your tone and your vocal variety, there is a platform like Sushant is already there, named Toastmaster, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड टेबल टॉपिक स्पीकिंग, राइट? टेबल टॉपिक मास्टर. सो उसमें क्या होता है, यू हैव टू पिक अ स्लिप एंड वॉट एवर इज रिटर्न देयर, यू हैव 30 seconds टू स्टार्ट. सो 30 सेकेंड में आपको अपना कंटेंट बनाना भी है, आपको बोलना भी है, और फॉर अबाउट 1 minute to 1.5 minute you'll have to speak. So you can join these type of platforms. और अगेन आप खुद भी कर सकते हैं. आपने कुछ टॉपिक्स चूज़ किए, आपने उनको लिखा, एक बाउल में डाला, कोई एक चिट ली और मिरर के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया. और आपसे अच्छा जज Absolutely. और कौन हो सकता है आपके बारे में, राइट? सो वंडरफुल आंसर, सुशांत. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन बॉडी लैंग्वेज एनहेंस और डिट्रैक्ट फ्रॉम आवर मैसेज? कि जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज उसको कैसे डिट्रैक्ट कर सकती है या कैसे एनहेंस कर सकती है? Excellent. So again, जो भी हम बोलते हैं ना, our words are not as important as our body language. हमारी बॉडी लैंग्वेज से जो चीज कम्युनिकेट होती है, सामने वाला पहले उससे कनेक्ट होता है. एग्जैक्टली. Whatever I'm speaking, if I'll speak it in this way, hi everyone. So today we are talking about communication. So what do you like to learn about communication? You would already be like, यार आ गया पकाने. आप सुनोगे ही नहीं मेरी बात. It would already become a barrier between you and me. So it's important that you always keep yourself energized. अच्छा, energized रहने का मतलब ये नहीं होता that you go on the stage and you just start walking on the stage, you start dancing on the stage. But the idea is that your body language must be calm. It must be composed. तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को काम और कंपोज बना सकती हैं. सो व्हेनेवर आई कंडक्ट अ सेशन, बिफोर आई जॉइन दैट सेशन, आई डू बेसिक स्ट्रेचिंग. That helps me to feel energy on the stage. Then there are certain exercises which can help you to relax your jaw. Like there is an exercise where you just open your mouth widely, like this, and then you can say something like Q E Q things like this. The idea is that your jaw must be relaxed whenever you are speaking. So such type of exercises always help you to improve your body language. These are the things which you can do. Third, which I would say, which you have to keep in mind is awareness. अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं ना, व्हाई आई डू नॉट टॉक अबाउट इट एक्सप्लिसिटली, बिकॉज फिर हम इसे ना थ्योरेटिकल लेवल पे ले जाते हैं. मैनी पीपल लुक एट इट एंड से, अच्छा इसका मतलब हमें स्टेज के ऊपर ऐसे जिससे रखने चाहिए, ऐसे नहीं रखने चाहिए, हमें आई कांटेक्ट यहाँ मेंटेन करना है, यहाँ नहीं करना है. What happens whenever you're speaking, you cannot be conscious about your body language all the time, right?
So if you have to make sure that you follow eye contact while you are on the stage, you have to make sure that you create your personality in a way that you maintain eye contact even in general communication. So it's not like you can practice or fake your body language. Once the more you are feeling confident from inside, the better you are feeling about your content, the more energy you have, the better your body language will be at the time at that time. Hope that Right. answers the Wonderful question. answer. Wonderful answer. I really appreciate it. So, once again, all of you who are here, you can ask your questions. Do not feel that it can be what type of questions, what other people will think. It's your question, might be some other people have the same question. So, don't think about it, just ask, right? And you will not only be helping yourself, but to others if you'll ask that question. So I have another question here. How can we adapt our communication style to different audiences? कि हर स्पीकर का अपना अपना एक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, बट जो हमारे ऑडियंस हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो अपना जैसे कि हमने बात की विजुअल्स के थ्रू लर्न करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से लर्न करते हैं. सो किस तरह का मैं कम्युनिकेशन स्टाइल अडेप्ट करूं और किस किस सिचुएशन में मैं उनको लाइक कैन आई चेंज दोज स्टाइल्स और इफ यस देन वो स्टाइल क्या होना चाहिए. Okay. Another intriguing question and quite connected with what we discussed in the first segment of our talk. So, as I shared, क्या होता है ना, हम सब different होते हैं. So, the way to go forward is you do a demographic and psychographic test of your audience. जैसे एक मार्केटर पहले कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, कोई भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन से पहले ऑडियंस को समझता है ना, हमें भी समझना होगा. वी हैव टू फाइंड द कॉमनैलिटीज बिटवीन आवर ऑडियंस. लेट्स से in the context of people who have joined the session, people are joining it from different age group, from different walks of life. But if they all are joining in a communication workshop, that seriously means that they want to improve their communication, right? Similarly, in a Toastmasters platform, people wants to improve their communication. So if you talk somewhere, help them to improve their communication, you will be able to hit their pain points. You will be able to solve their problems. So this is how you have to see it on a surface level. Now let's say you find some common grounds. जैसे जब मैं अपनी टोस्ट मास्टर्स की ऑडियंस को एनालाइज करता हूँ, तो मैं तीन चीजें फाइंड करता हूँ. नंबर वन, most of the people are in the age group of 25 to 30. They're starting their career, they're doing somewhere well in their career, and some of them are also taking a transition in the training and leadership industry. That's why they're here in Toastmasters to learn and grow better. दूसरी चीज मैं ये एनालाइज करता हूँ that most of them have a very positive kind of attitude. They're open to learning, they are very energetic by the nature, they always encourage you to speak more, to do better. So that becomes a kind of psychographic analysis. Now इस एनालिसिस के बेसिस पे जो मेरी कॉन्वर्सेशन होती है, इसका मतलब क्या है, मेरी कॉन्वर्सेशन कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे नहीं हो सकती. कुछ ऐसा नहीं हो सकता समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डाइसेप्चर फॉर अ 25 years old. या फिर कुछ ऐसा नहीं हो सकता विच इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर मैं बातें करने लग जाऊं बिल्कुल जैसे कौन सी बॉलीवुड पहले मूवी आती थी ना जहाँ पे देयर वाज अ कैरेक्टर ऑफ संस्कारी बापूजी, अगर मैं संस्कारी बापूजी की तरह बातें करने लग जाऊं उनसे कि बच्चों, हमें अपनी बातों को समझना चाहिए. Okay, am I audible? By the way, somebody commented I can't understand. So what I'm saying is that you have to talk in the context of the other person, right? अगर मैं उनसे इस तरह से बातें करने लग जाऊं which is out of their realm of thinking, they won't be able to understand whatever I'm saying. So मुझे उनकी भाषा में बात करनी है, उनकी डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स को समझ के. Okay. Awesome, awesome, awesome. So the next question is, how can we effectively manage nerves and anxiety before and during a presentation? Like if I'm speaking, उस टाइम पे कुछ लोग बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं और उसको कैसे हैंडल करें. So before presentation, take a pause. क्या होता है ना, whenever we go on the stage, हम immediately बोलना शुरू कर देते हैं. When we are on the stage, especially when we have started our journey, तो एक nervous energies होंगी. We'll feel nervous, will our heart will beat faster. So if we start speaking immediately, what is going to happen? We're going to mess up many things.
Our words will not be clear, our communication will not be clear. So take a pause, absorb the energies, look at your audience on the right side, look at them on the left side, and then start speaking. It will allow you to explain your content with a better flow. Secondly, during the presentation, speak slowly if you're facing such kind of nervousness. और कोई भी इंसान आपको अगर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, let's say if somebody in the audience is trying to create a kind of nuisance, is trying to laugh or trying to distract you in any way, make sure you do not maintain eye contact with them. So this is how these Okay. are the small tricks which you can follow to ensure that your nerves are being calm during whatever you're speaking. Also, add something which you can do to make sure that you do not feel low, do not feel dehydrated on the stage. Drink enough water before going to the stage, and even during the presentation. If you want to take a 20-30 second break, also allow your audience to take a break in between. Drink some water. This is how you can channelize a nervous energy. And ये एक चीज हमेशा याद रखो, if we are into public speaking, if we are into mass communication in any capacity, कुछ लोग तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो हमारा मजाक बनाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि हम पे हंसेंगे, हमारी बातों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे. So it's okay. Life is always going to be like this, but we have to move and we have to be consistent in whatever we are doing. राइट. सो ये पहले से एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि कुछ लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, 10%, 20%, 25% जो आपके साथ नहीं होंगे उस जर्नी में, राइट? दे विल नॉट बी विद यू. सो लाइक अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए, तो उनको एकदम से वो चोट नहीं फील होगी, राइट? लाइक समबडी इज मेकिंग फन ऑफ देम. ऑसम, ग्रेट, Absolutely. गुड वन. अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि अपनी एंग्जाइटी को मेंटेन करने के लिए, हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, काम रखने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए. तो क्या कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो हमें कम्युनिकेशन के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, और अगर Absolutely हाँ a wonderful तो वो question. क्या हैं? Yes, indeed a wonderful question. So जो common mistakes हैं, that is more related to making assumptions. Most of us make an assumption. जैसे कि मैंने बोला कि context is important. Now how many times we make sure that the other person understands the context of what we are saying? हम तो अपना बोल देते हैं, सामने वाले को समझ आए या नहीं आए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, वो हम सोचते हैं वो सामने वाले के ऊपर है. बट राइट. दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes, अगर सामने वाले समझना ही नहीं चाहे, then you cannot do anything. But your responsibility is that you do your level best. So do not assume. हम assume कर लेते हैं चीजें कि उसे बुरा नहीं लगा होगा, वो तो मेरा दोस्त है, अरे उसने ये कर लिया होगा. So do not assume, never presume. That should always be a policy. And apart from it, हम most of the time चीजों को ना बड़ी lightly लेते हैं. You know, casual approach of communication. We make fun, we make the other person feel uncomfortable, and then we think that why is it not working for us? So always have a consciousness of what you are doing. Every time you cannot analyze things, that's okay. Sometimes things goes in a flow. That is always going to be a part of the journey. But it's important that you have a kind of consciousness. You understand the dynamics well and you are sensitive. So it comes when you sensitize the communication. That it's okay. If the other person felt bad about because of me, I can apologize freely. So these are some of the things. All right. I hope all of you are enjoying the question and answer round. I'm sure these answers will help you in future or in your daily communication. So there is another question. Uh, how can we handle unexpected challenges or interruptions? Interruption तो आपने जैसे बताया कि if somebody is making fun of you, do not make the eye contact. But कुछ और भी unexpected challenges अगर आ जाते हैं, then how should we handle them? Okay. So मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से आंसर करना चाहूंगा. One is on the context of when you are speaking live on the stage, and secondly, whenever you are doing something online, like this session which we are doing on YouTube, right? Yeah. So one is that let's say you are in a classroom, you're taking a training session, and few people make noise.
few people are disturbing. So number one, either try to involve them. So जैसे मेरे एमबीए के टाइम पे कई जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे वो क्या करते थे, सीट्स चेंज कर देते थे और उनसे फिर पूरी केस स्टडी सॉल्व करवाते थे. So you try to involve them in any way. Now, if you think the participant is really being complacent, don't want to listen, don't want to participate in any capacity, so the way to go forward is that somewhere either have that kind of authority to make sure that their presence do not disturb the entire class. You can take a strict action at that time. Maybe send them out of the class or maybe send them to the last bench. Would let them do whatever they want to do, but make sure that it does not disturb the flow. And also that understanding कि कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे ही. Once you have that understanding, you always go prepared. Now, Right. if something goes wrong, let's say in an online setup, a very interesting thing I would like to share. Just before starting this live stream, my laptop was not working. I just formatted it yesterday. आज मेरे पास laptop आया है, and still the StreamYard was not opening in the laptop, despite of having a good internet connection. We tried our level best. The session got delayed for 3 to 4 minutes because of that only, for which I apologize also. But the idea is that does that affect the way I wanted to conduct the session? No. When I looked into the mobile, the way I was planning the session, the image I wanted to share, the things which I wanted to share, everything changed in a minute. But does that interrupted my spirit? No. So क्या होता है कई बार life tests you in multiple ways. And it's not necessary that every time you have a predetermined thought process or a predetermined answer to solve those problems, because the type of test life gives in front of you is not like a prepared speech. It is more like an impromptu speech. You have to respond on the spot. So make sure that even if thing goes wrong, you're calm, composed, it's okay. And for a long term, if that happens repeatedly, then learn how to handle technical glitches. और मे बी जैसे हाँ टोस्ट मास्टर्स की बात हुई है, तो टोस्ट मास्टर्स में जब हम ऑनलाइन मीटिंग करते थे तब हम क्या करते थे, एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबली इसके लिए डेलीगेट कर देते थे, एंड वी यूज टू कॉल दैट पर्सन एज टेक मास्टर. The tech master used to manage the entire proceedings, all the technicalities. So there are always ways to handle it. And if there is any distraction from the audience in an online setup, you can always put them on mute. You can always make them leave the meeting. You have that authority. That authority is easy in the online mode. Hope that answers the question. Yeah. Wonderful. Wonderful. I've got another answer here. Only two more questions as we have time constraint. So the first question is जैसा कि हम एक स्पीकर की तरह बात कर रहे हैं, लाइक व्हाट द स्पीकर शुड फॉलो, राइट? क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बैरियर्स हो सकते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है, बट व्हाट स्ट्रेटजीज कैन हेल्प अस, फॉर एग्जांपल, to become a better active listener? If somebody is asking question from the audience, how can I be an active listener in the session or during the speech? Excellent question, I must say. So listening is also an art. And if we have to become an artist, most important thing we have to crack is the understanding of the other person. You know, most of the time, why we are not able to listen, देखो एक चीज होती है कि जो right state of mind होता है ना, उसके पीछे का कोई रूट कॉज नहीं होता. रूट कॉज हमेशा प्रॉब्लम का होता है. जैसे अच्छी हेल्थ का कोई रूट कॉज नहीं होता, लेकिन बीमारियों के रूट कॉज होते हैं, राइट? सो अगर हम एक अच्छा एक्टिव लिसनर बनना है, तो हम एक अच्छा एक्टिव लिसनर क्यों नहीं बन पाते, उसके रूट कॉज के बारे में बात करनी होगी. एंड दैट रूट कॉज विच आई फाइंड इज that most of the time we are always occupied with our assumptions and our preconceived notions. हम कभी भी चीज़ों को as it is नहीं देखते हैं. For example, if we have a preconceived notion, let's say, that the person who is speaking on the stage must have a certain voice or must have a certain personality type, then if the other person shares something which is out of our realm, हम कहेंगे तो कि हम एक्टिवली सुन रहे हैं, लेकिन हम एक्टिवली उसे नहीं सुनेंगे, राइट? So hota kya hai, like if we have, let's say, a glass of water with us and that water is already filled, and if I try to enter more water into it, what is going to happen? It is Mm. going to come down, right? Yeah. So if I have to
If I have to enter the water in a glass, what I have to do, I have to first empty the glass, right? So we all have to first empty our minds. और ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने सिर्फ बोल दिया और हमें लगा अच्छा अब तो empty our minds, so I'm going to become an active listener. No, it will take practice. Just like I shared that some kind of mindset techniques we have to follow in public speaking. Again, we have to follow certain mind step and behavioral changes to implement this in our life. Meditation can be very good way, and just Right. being actively listening to intriguing talks, various people, and that can also strengthen this muscle. So the idea is that first we have to develop an understanding of what goes wrong, and secondly we have to do certain practice and we have to follow certain rituals to ensure that we become an active listener. All right. Okay, so I should not ask the next question because that should be the last one. But जैसे आपने अभी कहा meditation, so I just got one question clicked. That is my question actually. So, do you think visualization can help people? Yes, I think yes and no both actually. And why I'm saying this, because क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन जब हम सक्सेस के बारे में करते हैं, जब हम इस चीज के बारे में विजुअलाइज करते हैं दैट वी हैव अचीव समथिंग, तो अब क्या होता है, लाइफ तो एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ना. मान लो मैं और प्रशांत सर दोनों एक कंपटीशन में है, हमारे टोस्ट मास्टर्स में एक कंपटीशन होता है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो वर्ल्ड चैंपियन तो कोई एक ही बनेगा था दोनों में से. हम दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छे कोचेज हैं, बट वर्ल्ड चैंपियन तो एक ही बनेगा. वन पर्सन हैज टू बी द रनर अप. हम दोनों ने विजुअलाइजेशन की पावर लगा दी, दोनों ने सेम तरीके से विजुअलाइज किया, सेम विजुअलाइजेशन ट्रेनर ने हमें ट्रेन किया, बट ओनली द वर्ल्ड चैंपियन विल बी वन. So if we have already imagined success so much, what is going to happen to the other person? That person is going to feel really bad about it, feel really shattered. And that happens with most of us. You know, एक स्टूडेंट का मैंने पढ़ा था, दैट स्टूडेंट विजुअलाइज एसआरसीसी सो मच, ही वाज अ 12th क्लास स्टूडेंट, कि उन्होंने अज्यूम कर लिया था दैट ही वुड गो इन एसआरसीसी. और उनकी Hmm. परसेंट, उनकी 12th में परसेंटेज आई 94%, एंड ही कमिटेड सुसाइड. Why? Oh, Because he got conditioned to think in such a way कि SRCC नहीं तो life नहीं. So I never promote visualizing success. What I promote rather is visualize the process. Now, in our example, what if me and Prashant sir both visualize that we are becoming a better speaker? We've entered into the world championship stage. We are walking on the stage confidently. We are talking confidently. Now, such visualization will help us to take better action of our karma. And our karma in this situation is our speech, is our topic, right? So visualize the process and not the result, because result is not in your hand, karma is in your hand. जो चीज हमारे हाथ में है उसी के बारे में तो हम सोच सकते हैं ना, तो उसके बारे में सोचें. awesome. Amazing. Amazing. So, now the last question is any final tip you want to give to the audience who are present here or who will be watching us later? Okay. So whatever I have shared, I would just say that do not consume this content on a conceptual level. Okay, detailing करनी है, mnemonics follow करने हैं. Rather, I would suggest all of you to take that first baby step. As the saying goes, journey of 1,000 miles begins with a one single step. So take that first baby step, record your video, maybe post it to your mentors, post it to me, Prashant sir, upload it on YouTube if you want, send it to anyone who want you to succeed and become a better communicator. Take feedback. And then slowly and gradually see that how you can improve and how you can implement these things in your life. That would be my feedback. That would be my Okay. final suggestion and tip. Yeah. Thank you so much. I really appreciate your answers. And every one of you who are present here, if you love the session, just type I love the session or more power to you, Sushant. He has done a wonderful job, and I really would like to extend my heartfelt gratitude to all of you who are present in the session and who will be watching us later on the topic of Speak to Succeed. And once again, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा. It was an incredible experience to have such an engaged and enthusiastic audience like you. आप लोगों का जो participation है बहुत अच्छा है. So keep it up. Your active participation actually got questions
आप अभी भी पूछ सकते हैं if you have any before we end the session. And again, the valuable insights from Sushant made the session truly special. And I hope the information shared by Sushant has left a lasting impact on your understanding of effective communication and public speaking. I'm so grateful again to all of you. Your presence and involvement in the chat actually created an interactive and dynamic environment that made the session even more enriching for everyone. We were enjoying when you were writing us. So, once again, I encourage all of you to practice and follow these communication skills जो सुशांत ने भी शेयर की हैं आपसे, and embrace opportunities to speak in public, engage in meaningful conversations and embrace personal growth. क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि every word you speak has the potential to create a positive impact on those around you. और दूसरा, आपके वर्ड्स जो हैं, your words have power, so use them wisely. Once again, thank you so much for being a part of this incredible session, Sushant. Your enthusiasm and support inspire all of us to continue bringing valuable content, and great to have you once again. Thank you for the accepting my proposal and empowering all of us. Thank you so much once again. And friends, if you want to connect with Sushant, I'll mention his details, his contact number, or his email address in the description box. So if you would like to connect, you can. And it will be good अगर आप सीखते हैं किसी ऐसे mentor से जो already अपने लिए success create कर चुका है, and he is just enjoying the journey. If you also want to enjoy the journey, then connect with him. He is a wonderful person. He is a wonderful soul. And thank you once again to Sushant and to all of you. Thank you, Prashant, for inviting me. That means a lot. Thank you so much, everyone. Namaste. See you next week with a new topic and a new speaker. Bye bye. Thank you.